So, good morning, students. Now we shall discuss our next topic in geography. Okay, you already know that we have started our chapter minerals and energy resources, and in this topic we had earlier discussed about ferrous minerals. Now we shall discuss about our next topic, that is the non-ferrous minerals. Is that clear, students? So now please write down the first question. What are non-ferrous minerals? Give examples. Please write down the question. What are non-ferrous metals? Give examples. Write the answer also, because the appropriate answer is not given in your textbook. So please write the answer also. The minerals that do not have any type of iron content are known as non-ferrous metals. ठीक है, जो जिन मिनरल्स में किसी भी तरह का आयरन कंटेंट नहीं होता, those minerals are known as non-ferrous minerals. The minerals that do not contain any type of iron content are known as non-ferrous minerals. For example, copper, lead, bauxite, tin, etc. Please write down this answer. Copper, lead, bauxite, tin, etc. Now, but remember one thing also. Most of the students get confused in one thing, that they always mix non-ferrous minerals with non-metallic minerals, but don't mix them. Non-metallic minerals will come further. ठीक है, non-ferrous minerals are a separate thing, non-metallic minerals are separate thing. I will make you more clear, ठीक है, further. But these are now non-ferrous minerals. Okay, so these are non-ferrous minerals. Now in these non-ferrous minerals, first of all we shall discuss about copper. हम लोग सबसे पहले कॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे. द मिनरल दैट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ आयरन कंटेंट. ठीक है, द इंपॉर्टेंट मिनरल, एंड दैट इज व्हाई वी शैल डिस्कस अबाउट कॉपर नाउ. ठीक है बच्चों, फर्स्ट नॉन फेरस मिनरल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉपर. Now in copper you all know that copper is a good conductor of electricity. ठीक है, तो first point about copper is a good conductor of electricity. Now if copper good conductor of electricity. ठीक है, now if copper is a good conductor of electricity, that means it is mostly used in the electricity industry. Mostly used in इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री ऐसे लिखो. ठीक है जी, मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, बिकॉज वी ऑल नो दैट द वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. ठीक है, दैट्स व्हाई कॉपर इज मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कॉपर, दैट इज it is easily malleable. It is easily malleable and ductile. It is easily malleable and ductile. Now, what is this mean? Easily malleable and ductile, that we can easily give any shape to the copper. आपने देखा होगा, we also use copper in the utensils industry. आपने बहुत सारे देखे होंगे, तांबे के बहुत सारे बर्तन भी बनते हैं. तांबा जो है वो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, लेकिन वी ऑल्सो यूज इट इन यूटेंसिल्स इंडस्ट्री. बिकॉज why we can make utensils, why we can make wires, because it is easily malleable and ductile. इसको हम लोग easily किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये आराम से किसी भी फॉर्म में ढल जाता है. अब ये why such so? Because it is a non-ferrous mineral. इसमें आयरन कंटेंट है ही नहीं, and as it does not have any type of iron content, that's why it is very easily malleable and ductile, and that's why we can easily give it the shape of wires. We can easily give the shape of utensils to copper. That is why copper is a very important non-ferrous metal. Is that clear, students? That is why copper is a very important non-ferrous metal. Now, next point of E point of copper. Now the question arises, where do we find copper? देखो बेटा, I want to tell you one thing. India is not a very large producer of copper. ठीक है, so that's why India has to import the copper. So we can write here, India being a very small producer of copper,
producer of copper has to import copper from foreign nations. ठीक है जी, हमारे देश में भी कॉपर इज प्रोड्यूस्ड, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड, बट इट नॉट इन वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज वी डोंट हैव वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ कॉपर इन इंडिया. सो दैट्स व्हाई वी एक्सट्रैक्ट कॉपर इन वेरी लेस क्वांटिटी in this country, and we have to import copper from the foreign countries to meet our demands. Is that clear? Therefore, we can say that India is not a very large producer of copper, and India is a very large importer of copper. Okay, now the question arises, if we are producing copper, whether it is in a very small quantity, but we are producing copper, so where are the mines? Where are the copper mines? Please write down. Next option. F option, that is, we mostly have the mines of copper in Balaghat mines. Okay, you can underline in your textbooks also. Balaghat mines in मध्य प्रदेश. ठीक है जी, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश. ठीक है, दीज आर द मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग माइंस ऑफ इंडिया. ऑल्सो वी हैव द प्रोड्यूसर स्टेट्स लाइक झारखंड. ठीक है, जस्ट लाइक यू ऑल नो अबाउट छोटा नागपुर प्लेटी, दैट इज झारखंड, एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. These are the copper producer states of India: Madhya Pradesh, Jharkhand, and some parts of Rajasthan. But still, remember all this, that we are not producing copper in very large quantity. We are producing copper in very less quantity, and we have to import copper to meet our demands because India is not a very large producer of copper. Is that clear, students? Chalo. So this was our first non-ferrous mineral. That was copper. ऐसा मिनरल जिसमें कि आयरन कंटेंट बिल्कुल भी नहीं. तो ऐसा कंटेंट में हमने वी हैव स्टडीड कॉपर. नाउ अंडर नॉन फेरस कैटेगरी वी विल स्टडी द नेक्स्ट मिनरल, दैट इज नंबर 2, बॉक्साइट. नंबर 2 इज बॉक्साइट. नॉन फेरस मिनरल नंबर 2, बॉक्साइट. ठीक है जी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा व्हेन इन अवर प्रीवियस वीडियोस वी हैड डिस्कस्ड अबाउट बॉक्साइट. जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद ना, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर. आई हैड टोल्ड यू दैट बॉक्साइट इज वन ऑफ दोज मिनरल्स whose ore is dissolvable in water. मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉक्साइट इज सच ए मिनरल whose ore is dissolvable in water. इसका ओर जो है वो पानी में इजिली घुल जाता है. दैट्स वाई बॉक्साइट, वाइल एक्सट्रैक्टिंग बॉक्साइट, वी डू नॉट हैव एनी नीड टू एक्सट्रैक्ट बॉक्साइट 2 times. वी हैव टू एक्सट्रैक्ट बॉक्साइट ओनली फॉर अ सिंगल टाइम. इज दैट क्लियर? We have to extract the bauxite only for a single time, that is from the plateaus. And after extracting from the plateaus, we put it into large water containers. The ore gets dissolved into the water. Water is thrown and the bauxite is remained. So that is why bauxite is one of the very few minerals whose ore is easily dissolvable in water. And that is why it is very cheap. It is a very cheap mineral. ये काफी सस्ता पड़ता है. It is a very, क्योंकि because we do not have any need to extract it from the ore. हम इसको पानी में घोल के आराम से इसको ले सकते हैं. तो that is why इसको बनाना काफी सस्ता पड़ता है. That is why it is a very cheap mineral as compared to iron, as compared to copper, as compared to manganese. Is that clear? So this was the second point of bauxite. Now number 3. But I think you have already written these 2 points. Next, number 3. Number 3 बच्चों, this is very important point, very important point for bauxite. In the previous video we had discussed that steel and aluminium, these are the 2 minerals that are not found in nature. We have to produce these 2 minerals. First one is steel, ठीक है जी, first one is steel and second one is aluminium. These two minerals are not found in nature. ये नेचर में सीधे नहीं मिलते. हमें इसको भी बनाना पड़ता है और हमें इसको भी खुद बनाना पड़ता है. स्टील, आपको याद होगा इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड दैट स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ मैंगनीज. स्टील को हम लोग मैंगनीज से बनाते हैं.
समझ लगे, ये आपने हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बॉक्साइट। तो आई वांट टू टेल यू दैट एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ बॉक्साइट। ठीक है जी, स्टील को हम लोग बनाते हैं मैंगनीज के साथ, विच इज अ फेरस मिनरल, बट एल्यूमिनियम को हम लोग बनाते हैं बॉक्साइट की मदद से, विच इज अ नॉन फेरस मिनरल। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट एल्यूमिनियम। चलो अबाउट एल्यूमिनियम, यस। So, write down the third point, that aluminium is manufactured. The third point, this will become the third point. Aluminium is manufactured from bauxite. ठीक है, थर्ड पॉइंट तो यही बन गया। नाउ देखो बच्चों, again when we make aluminium from bauxite, na, aluminium is also very important mineral. You all know that aluminium is used in various types of industries. Also it is used in aluminium industry, and it is used in also it is used in utensils industry. Aluminium के utensils भी बनते हैं। Now why aluminium utensils are made? Because it is again easily malleable, just like copper. It is again easily malleable, and that's why it can be given any shape. So therefore it is used in various type of industries, including utensils industry. Is that clear? So D option क्या बन जाएगा? The very important mineral of aluminium is very malleable and ductile. Which mineral? Aluminium. Aluminium is very malleable and ductile, which is produced from bauxite. क्योंकि बॉक्साइट होगा तभी एल्यूमिनियम होगा, अगर बॉक्साइट ही नहीं होगा तो एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। जैसे कि मैंगनीज होगा तो स्टील होगा, ऐसे ही बॉक्साइट होगा तो आपका एल्यूमिनियम भी होगा। तो दिस एल्यूमिनियम which is manufactured from bauxite is very malleable and ductile, and that is why it is used in utensils industry. Is that clear, students? Now next point, E point, bauxite in the E point. The question arises, where do we find bauxite in this country? E option please write down. देखो बच्चों, Odisha is the largest producer. Odisha is the largest producer of bauxite. Also we can find bauxite in the areas like Amarkantak plateaus and Maikal plateaus. Please underline in your books. Amarkantak plateaus ठीक है जी, अमरकंटक प्लेट्यूज एंड माइकाल हिल्स। these are the parts of Malwa plateaus. याद रखना, अमरकंटक हिल्स आर इन मालवा प्लेट्यूज, ठीक है, एंड माइकाल हिल्स आर अगेन इन मालवा प्लेट्यूज। तो मालवा प्लेट्यूज एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज ओडिशा, झारखंड। तो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, ठीक है। अगेन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट, ठीक है, एंड विच इज अ नॉन फेरस मिनरल. So we have discussed now about two non-ferrous minerals. First non-ferrous mineral we discussed about copper. Second non-ferrous mineral we discussed about aluminium. And third we have also discussed about another mineral, that is aluminium, which is manufactured with the help of bauxite. Is that clear? So we have discussed here about three minerals. Aluminium is the part of bauxite. Clear? Chalo. Next mineral. So now non-ferrous minerals are completed. ठीक है, non-ferrous minerals are completed. Our next topic is non-metallic minerals. Okay, before we move further on, I want to give you some questions also. Please write down some questions. I just forget to give some questions now. Please write down. We have discussed about copper. So please write down the question about copper. What are the major uses of copper? Please write down the question. What are the major uses of copper? Write any 3 points. What are the major uses of copper? Write any 3 points. ठीक है, we have already discussed about copper. Next question. What are the major uses of bauxite? What are the major uses of bauxite? Write any 5 points. Write any 5 points. इसमें आप लोग एल्यूमिनियम के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें you can include aluminium because aluminium is produced with the help of bauxite, ठीक है, तो वो भी आ सकते हैं। Write any 5 points. Next, one more question.
What is aluminium? What is aluminium? How it is obtained? What is aluminium? How it is obtained? What are its uses? What are its uses? चलो, so this was our non-ferrous minerals. Now our next topic बच्चों, that is non-metallic minerals. Non-metallic minerals. Non-metallic minerals. अच्छा, अब बेटा बिफोर वी मूव फर्दर ना, आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर. Most of the students get confused in these 2 points. They always mix non-ferrous minerals. They always mix non-ferrous minerals and non-metallic minerals. Non-metallic minerals. But I want to make very very clear to all of you that these two are totally separate things. Non-metallic minerals are separate thing. Non-ferrous minerals are separate thing. अक्सर बच्चे इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, which is totally wrong, जो कि गलत हो जाएगा बोर्ड एग्जाम. So what is the difference? Basic difference between, लिख लो ये भी क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन. What is the difference between non-ferrous minerals and non-metallic minerals? What is the difference between non-ferrous minerals and non-metallic minerals? Write down please. देखो बेटा, non-ferrous minerals as we have already discussed, these are the minerals that do not contain iron. ठीक है जी, जिनमें आयरन कंटेंट नहीं है, those are non-ferrous minerals. Now what are non-metallic minerals, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट. non-metallic क्या है? देखो बेटा, non-metallic are those minerals do not have any metal. इसमें क्या आ जाएगा? Do not contain any metal. जिसमें मेटल ही है नहीं, कोई भी मेटल नहीं. देखो मेजर फर्क समझ लो ध्यान से प्लीज. नॉन फेरस मिनरल्स में सिर्फ आयरन नहीं, बाकी उसमें मेटल है. जैसे अभी हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉपर, अभी हमने कॉपर के बारे में पढ़ा, अभी हमने बॉक्साइट के बारे में पढ़ा, अभी हमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा. ऑल दीज आर मेटल्स. ये मेटल्स हैं पर इनमें आयरन नहीं. ना कॉपर में आयरन है, ठीक है, ना तो कॉपर में आयरन है, ना एल्यूमिनियम में आयरन है, और ना ही बॉक्साइट में आयरन है. इनमें बस आयरन नहीं, ठीक है. तो अब ना इस देखो ना इसमें आयरन है, ना इसमें आयरन है, तो दैट्स वाई इनमें आयरन नहीं है. दैट्स वाई दे आर नॉन फेरस मिनरल्स. पर इनमें एक चीज है, वो क्या, कि इनमें मेटल है. दे आर मेटल्स. ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल. तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है. तो दैट्स वाई दे आर मेटालिक मिनरल्स. पर इनमें आयरन नहीं है, तो दैट्स वाई दे आर नॉन फेरस मिनरल्स. तो नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन ना हो पर कोई और मेटल हो. जैसे कि कॉपर मेटल है पर उसमें आयरन नहीं, तो दैट्स वाई वो मेटालिक मिनरल तो है बट इट इज ए नॉन फेरस मिनरल. ऐसे ही बॉक्साइट है, बॉक्साइट में भी मेटल है पर आयरन नहीं, तो दैट्स वाई इट इज ए मेटालिक मिनरल बट नॉन फेरस मिनरल. सेम ये चीज एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम भी मेटल है पर आयरन नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज अ मेटालिक मिनरल बट नॉन फेरस मिनरल. तो नॉन फेरस मिनरल्स आर जिसमें सिर्फ आयरन नहीं है, बाकी सारे मिनरल्स हैं, वो है नॉन फेरस मिनरल्स. लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी मेटल नहीं है, मेटल ही है नहीं उनमें. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल यहां एग्जाम्पल लिखो आप लोग, 1 मिनट प्लीज. हाँ, एग्जाम्पल यहां पे लिखो बच्चों, लाइक सॉल्ट एंड माइका. बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है, माइका एंड सॉल्ट. ये एग्जाम्पल लिखो नॉन मेटालिक में, सॉल्ट एंड माइका. अब आपने, चलो माइका का भी एग्जाम्पल हम बाद में देते हैं, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं सॉल्ट का, नमक का. अब नमक आप हम सब लोग खाते हैं, हम सब लोग यूज करते हैं, हम सब लोग देखते भी हैं नमक को. नमक में कभी आपने मेटल देखा कोई? उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट ऐसा कुछ देखा नमक में? नमक तो पाउडर की शेप में, तो उसमें फिर मेटल तो है ही नहीं, है ना, नहीं है, कोई भी मेटल नहीं है. तो दैट इज वाई ऐसे मिनरल्स जिनमें कोई भी मेटल ना हो, दैट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मेटल, आर नोन एज नॉन मेटालिक मिनरल्स. ना उनमें आयरन है, ना उनमें कॉपर है, ना उनमें बॉक्साइट है, ना उनमें कोई और मिनरल एल्यूमिनियम है, कोई भी मिनरल नहीं, ना उनमें मैंगनीज है, एनी ऑफ द मिनरल. जब उनमें कोई भी मिनरल ना हो, ऐसे मिनरल्स को हम लोग, जब उनमें कोई भी मेटल ना हो, ऐसे मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स. कोई भी मेटल नहीं,
इनमें इनमें जो है ये वाले नॉन फेरस, इनमें सिर्फ आयरन नहीं है, बाकी सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, लेकिन इनमें कोई भी मिनरल नहीं, तो दैट कोई भी मेटल नहीं, इनमें कोई भी मेटल नहीं, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। इनमें क्या है, सिर्फ इनमें मतलब कोई भी मेटल नहीं, दैट इज व्हाई दे आर नॉन मेटालिक। फॉर एग्जांपल माइका एंड सॉल्ट। इज दैट क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन फेरस मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। बच्चे अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं दोनों को, इसको इसमें डाल देते हैं, उसको उसमें डाल देते हैं, या कई बार सेम ही समझ लेते हैं, ये दोनों चीजें सेम है। दीज आर नॉट सेम, दीज आर टोटली डिफरेंट। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगर सेम कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना इस चीज को। चलो नेक्स्ट, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, ये हमारा कवर हो गया, वी हैव डिस्कस दिस, ये हमारा कंप्लीट हो गया नॉन फेरस। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक के बारे में, जिनमें कोई भी मेटल नहीं। ठीक है, एग्जांपल माइका एंड सॉल्ट। चलो हम रबिंग इट डाउन। चलो अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपके पेज नंबर 56 है। ठीक, चलो नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक बच्चों वी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम माइका। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन प्लीज। व्हाट आर नॉन मेटालिक मिनरल्स? अभी लिखो, वही आंसर है। व्हाट आर नॉन मेटालिक मिनरल्स? गिव एग्जांपल्स। व्हाट आर नॉन मेटालिक मिनरल्स? गिव एग्जांपल्स। ठीक है, 1 मार्क्स पे। नाउ इन नॉन मेटालिक मिनरल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट माइका। देखो प्यारे बच्चों, माइका का क्या केस है? माइका इज ए मिनरल which is very thin and easily ductile and melted, easily ductile। माइका एक ऐसा मिनरल है which is very thin and easily ductile, we can give any shape to the mica। ठीक है, because it is very thin। और now why it is very thin and easily ductile? Because it does not have any type of metal। because इसमें कोई भी metal नहीं, that is why it is very thin and easily ductile। एक क्वेश्चन लिख लो, एक और राइट द क्वेश्चन। why mica is an indispensable ठीक है, why mica is an indispensable part of electric industry। why mica is an indispensable part of electric industry? write any 5 points। चलो अच्छा जी, और इसको और करके भी लिख लो। और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइका। चलो देखो बेटा, एक तो हमने पढ़ लिया वेरी थिन एंड इजीली डक्टाइल मेटल। नंबर 2, इसका एक और बहुत ही अच्छा जो इसका एडवांटेज है हमें, वो एडवांटेज क्या बच्चों? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब हमने कॉपर का पढ़ा था, वी डिस्कस्ड दैट कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज व्हाई कॉपर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, बिकॉज कॉपर से हम लोग वायर्स बनाते हैं। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। अब कैसे? आप सभी ने, मैं नाउ आई एम गोइंग टू रब इट एंड आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। देखो, माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आप सभी ने आप सभी ने देखा होगा, जो रेलवे लाइंस होती हैं उनके ऊपर से तारें निकल रही होती हैं, जिससे कि रेलवे इंजन्स चल रहे होते हैं। ठीक है, उन तारों से इलेक्ट्रिक करंट लेके इंजन्स चलते हैं, तो वो इस तरह से देखो खंभे लगे होते हैं और इस तरह से तारें जा रही होती हैं। आपने सभी देखे होंगे, यहाँ से वायर जा रही होती है ऐसे। ठीक है, और ये इनको टच कर रहे होते हैं, इसमें करंट होता है। अच्छा, इनमें करंट होता है, लेकिन ना यहाँ पर इन दिस वे, यहाँ पर कभी देखना ब्लैक से ना कुछ लगे होते हैं गोल से। ये चीजें माइका से बनी होती हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। बच्चों? इंसुलेटर्स। और ये किससे बने होते हैं? माइका से।
Now mica is a bad conductor of electricity. So what it does that when we use mica here, it does not allow the electric current to pass from here and go into these pillars. ठीक है, अगर इन पिलर्स में भी करंट आ जाता तो हम लोगों को भी इसको टच करने पे करंट लग सकता, लेकिन माइका यहां पर लगा होता है. इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास ऑन इनटू दीज पिलर्स. जिससे क्या होता है, बिजली सिर्फ इस तारों के अंदर रहती है, वो यहां से पास होके इनमें नहीं आ पाती. तो जिससे कि करंट सिर्फ यहां रहता है, इनमें नहीं आ पाता और हमको इसको टच करने पे करंट नहीं लगता. तो दैट इज व्हाई माइका इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ electricity industry, because it is a bad conductor of electricity. It does not allow the electric current to move here and there. जिससे कि दो फायदे होते हैं. बी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका क्या बनेगा, एक तो it reduces the risk of, लिख लो एक बार, reduces the risk of electric current. ठीक है, reduces the risk of electric current. ठीक है. नंबर 4 क्या बनेगा बच्चों, नंबर 4 डी ऑप्शन, रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी लॉस, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज से बचाता है. ठीक है ना. अब इफ द करंट विल रिमेन देयर वेयर इट शुड बी, देन इट डज नॉट गेट वेस्टेड. So it reduces the risk of electricity loss. Also, it reduces the risk of electric current because it is a bad conductor of electricity. That is why mica is very important part of electricity industry. Just like copper, which is a good conductor of electricity. And copper is a ferrous mineral. Sorry. Copper is a non-ferrous mineral. Copper is non-ferrous mineral but metallic mineral. ठीक है. कॉपर इज अ नॉन फेरस मिनरल बट मेटालिक मिनरल, बट माइका इज अ नॉन मेटालिक मिनरल. ठीक है जी, माइका इज अ नॉन मेटालिक मिनरल एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट डी ऑप्शन के बाद बच्चों इसका एक और पॉइंट देख लो, वेयर वी कैन फाइंड माइका इन दिस कंट्रीज. ई ऑप्शन देखो, माइका डिपॉजिट्स आर, बेटा आप देख सकते हो अगेन इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड कोदेरमा गया हजारीबाग. ठीक है. छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे देश में ज्यादातर यहीं पे निकलते हैं, आपको पता ही है. ज्यादातर मिनरल्स वी आर फाइंडिंग हियर. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू. और इसमें भी कहाँ पर है ज्यादातर, यू कैन अंडरलाइन योर बुक्स, दैट इज गया. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड गया. ठीक है, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर वी आर फाइंडिंग दिस नॉन मेटालिक मिनरल, दैट इज माइका. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is rock minerals. Question लिखो please. What are rock minerals? अच्छा, in rock minerals, first of all we shall discuss about limestone. Okay, so before we shall discuss about limestone, I must tell you that what are rock minerals. What is the definition of rock minerals? First of all, I want to tell you that the rock minerals are those minerals. The rock minerals are those minerals, the minerals that are, please write down this definition, but this is not written in your textbooks, please write down. The minerals that are not extracted from the ground, but the rocks themselves are broken and crushed down to manufacture, to create these. ऐसे लिख लो, या लोग are broken and crushed down to make these. ऐसे लिख, to make these. ऐसे लिख, to make these. These are known as rock minerals. Example limestone. ऐसे लिख. अब आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आर रॉक मिनरल्स. बेटा ऐसे मिनरल्स जिनको ना हम जमीन से नहीं निकालते, these are not extracted out of the ground. These are the rocks that themselves are crushed and formed in the form of powder, and that powder is again used
in various industries. Those minerals are known as rock minerals. Very good example is limestone. limestone क्या है आपका? चूना पत्थर, चूना जिससे हम लोग घर में व्हाइट वॉश करते हैं. तो limestone is not extracted from any type of any ground, ठीक है, any plateaus or any grounds. The rocks just like the Malabar hills, the Malabar and all these rocks, the rocks are crushed, ठीक है, and the rocks are broken and crushed into the form of powder, and then that powder is used in various industries, just like cement industry, just like all these industry, whitewash industry, and that powder is used. So these type of minerals are known as rock minerals, and in these rock minerals, first of all we shall discuss about limestone. ठीक है जी, चलो. I think you have written all this now. ठीक है, this is the definition of rock mineral and this is the example of rock mineral. So now I'm rubbing it. In rock minerals, we shall first discuss about limestone. So this was the answer of a question, rock minerals. Now write another question also. Another question, write a short note on limestone. Write a short note on limestone, which itself is a rock mineral. देखो बेटा, please underline. Limestone is formed in association with the rocks composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates. ठीक है ना, ये रॉक से ही बनता है जिसमें कि आमतौर पे calcium carbonates और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स वगैरह हमें मिलते हैं. ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन सब में मिलती हैं. ठीक है, उसके अलावा इट इज लाइमस्टोन इज अ बेसिक मिनरल विच इज मोस्टली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री. इसे हम लोग ज्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं. इज दैट क्लियर बच्चों? एंड ऑल्सो फॉर द स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेसेस. ब्लास्ट फर्नेस होती है जिसमें हम लोग मेटल्स को पिघलाने का काम करते हैं. तो वो ब्लास्ट फर्नेसेस को बनाने के लिए हम लोग लाइमस्टोन को यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? तो सी ऑप्शन लिख सकते हो इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लास्ट फर्नेस. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. So, ये जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं इतना, पर लिखना तो लिख लेना. तो अंडरलाइन प्लीज. ठीक है, राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कर लो. दिस इज द आंसर ऑफ योर रॉक मिनरल्स, दैट इज लाइमस्टोन. इज दैट क्लियर बच्चों? तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट अवर नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड ऑल्सो द रॉक मिनरल. लास्ट पॉइंट, सबसे नीचे आ जाओ. सबसे नीचे आपकी बुक में देखो बच्चों, हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग. द टॉपिक इज हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग. Write the question. What are the hazards of mining? Write any 5 points. What are the hazards of mining? Write any 5 points. और करके लिख लो. और करके what are the disadvantages? What are the disadvantages of mining? सबसे पहले hazards of mining आप देख सकते हो. It creates a lot of pollution. अगर हम लोग काफी ज्यादा माइनिंग करते हैं, कोल जैसे देखो आपने, कोल माइंस क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, तो माइंस, एनी टाइप्स ऑफ माइंस क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. ऑल्सो नंबर 2, हेल्थ प्रॉब्लम्स like respiratory problems, etc. Also skin problems, skin diseases. ठीक है, pollution, health problems like respiratory problems, skin diseases, etc. Number 3, लैंड डिग्रेडेशन. आसपास की सारी जमीन को खराब कर देते हैं. लैंड डिग्रेडेशन, आसपास की सारी जमीन को खराब कर देते हैं, जिससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाती है. नंबर 4, बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. अगर लैंड डिग्रेड हो जाएगी तो एग्रीकल्चर के लिए लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जिससे कि एग्रीकल्चर पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा. तो बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. नंबर 5, polluted ग्राउंड वाटर. जो आपको ग्राउंड वाटर है उसको भी पूरी तरह से पोल्यूट कर देती है माइनिंग इंडस्ट्री. सो दीज आर सम ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग, सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइनिंग.
ठीक है बच्चों. So I think you have already understood about all the topics we have discussed in this video. Please revise the chapter, and if you still have any doubts, you can send me your doubts in the group. Is that clear? Thank you, students. Thank you so much.